फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। So this is must. Okay, the model must. So we'll study here must, should, and ought to. Ought to, okay. Yeah, these are the models must, should, ought to. We are going to learn these. So must, you know, must means actually this is suggestion, strong suggestion. First use of this is to make a strong suggestion, to make a strong suggestion. Like, तो इसमें must हम कहाँ यूज, must means चाहिए, yes. जैसे आपको ऐसा करना चाहिए, तो should भी ये चाहिए और ought to का मतलब भी चाहिए। तो फिर डिफरेंस क्या है? दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो मस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग सजेशन। व्हेन यू आर सजेस्टेड टू डू समथिंग, इट मीन्स यू हैव टू डू इट बिकॉज अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज समथिंग। मतलब इसमें आपका ही नुकसान है, इसलिए आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बना लेते हैं, यू मस्ट लर्न English to get a better job. ठीक है? Okay sir. You must learn English to get a better job. तो must मैंने क्यों यूज किया, should क्यों नहीं किया यहाँ पे यूज? क्योंकि must करने से ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपको सीखनी चाहिए एक अच्छा जॉब पाने के लिए, तो आपकी जरूरत है ये। Yes sir. अब मैं सिंपल बोलूं कि यू शुड सिट हियर, तो ये सिंपल है, आपको यहाँ बैठना चाहिए, उससे कोई लॉस नहीं हो रहा आपका। Yes sir. पर कहीं पे आपकी जरूरत है ये, तो मस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग। यू मस्ट लर्न इंग्लिश टू गेट अ बेटर जॉब, एंड नाउ ही शुड टेक। अब जैसे मैं मस्ट फिर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉट should, he must take proper rest to recover. Now see this one, he must take proper rest to recover quickly. तो ये भी आपकी जरूरत है। Understand? Yes. अब should means चाहिए, that is simple should, like you should go there, you should come to my party, you should, simple you should learn English, ये भी बोल सकते हो आप। आपको सीखनी चाहिए, मगर रीजन तो मैं नहीं बता रहा ना क्यों। अगर कोई स्ट्रॉन्ग होता तो फिर हम मस्ट यूज कर लेते। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल शुड होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, यूज ऑफ शुड। तो शुड का सेकंड यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, शैल इज रिप्लेस्ड बाय शुड। सॉरी, जैसे आपने कहा व्हाट शैल आई डू नाउ, आपने कहा व्हाट शैल आई डू नाउ, मैं अब क्या करूं, व्हाट शैल आई डू नाउ, मैं अब क्या करूं। तो अब यहाँ पे शुड भी लगा सकते हो आप,
So what should should I do now? do now? अब मैं क्या करूं? क्या मैं बाहर आपका इंतजार करूं? तो shall I Should. wait for you outside? Yes, should I wait for you outside? Outside. Okay. ठीक है. Okay, sir. Should I go? Yeah, should I wait for you outside? Should I wait for you outside? क्या मैं बाहर आपका इंतजार करूं? Okay. ठीक. Yes, sir. Now, next is ought to. Ought to is also चाहिए. बट ये कैसा चाहिए जहां पे आपकी मॉरल ड्यूटी दिखती हो कहीं. आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है. Like you ought to follow traffic rules. You ought to follow the traffic rules. तो ये ought to यूज क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? Should और must क्यों नहीं कर रहे? Sir, moral duty. क्योंकि ये आपको ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है. You ought to follow the traffic rules. Yes, sir. Next, like we ought to, like we ought to help the poor. तो ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम गरीबों की मदद करनी चाहिए. We ought Yes, to sir. help the poor. Now we ought to educate the girls. We ought to educate the girls. The girls. Okay. So that is the use of should, must, and ought to. Ought. Okay. So Okay, you sir. may make sentences Okay, to sir. practice it.